ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। सबने कॉपी किया है ना लेक्चर 15? यस सर। यस सर। असाइनमेंट Yes, sir. डिस्कस करोगे अभी? सर असाइनमेंट डिस्कस कर लो ना। एक काम करते, पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर लास्ट में डाउट्स करेंगे। यहाँ कहाँ तक कर लिया था हमने? ये पूरा नोट सब- किया ये वाला? सब सर क्लोरीन खत्म हो गया था, ब्रोमीन स्टार्ट करना। नोट किया है ना पूरा? यस सर। ब्रोमीन प्रिपरेशन इज सिमिलर टू HBr gives MnBr2 plus bromine, and instead of HBr we may also use सी वाटर में थोड़ा बहुत NaBr होता है, ठीक है, जिस सर वी कांट हियर यू। प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो ब्रोमीन इज अ रेडिश ब्राउन ऑरेंज लिक्विड, ठीक है, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन क्लोरीन, बट इट स्लोली डिसॉल्व्स बाय रिएक्टिंग। और आपकी आवाज कट हो रही है। ठीक है सर। आवाज कट हो रही है बहुत। Similar hydrate is also formed by chlorine. Sir, your voice keeps cutting for me. I don't know if it's from my side or. यस सर। अच्छा, बाकी लोगों को Yes, वॉइस sir. कट हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। Yes, sir. वॉइस कट हो रहा है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। अभी भी वॉइस कट हो रहा है क्या? अभी ठीक है क्या? अभी बराबर आ रहा है। It's fine now. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रोमीन करते हैं। ब्रोमीन इज अ रेडिश ब्राउन ऑरेंज लिक्विड, इट इज लेस soluble in water than chlorine. It slowly dissolves by reacting with water to give a colorless solution of HBr and HOBr. It forms a hydrate with water at low temperature, Br2.8H2O. Similar hydrate is also formed by chlorine, and reactions are similar to chlorine. It's just that it is a slightly weaker oxidizing agent than chlorine. Now we'll talk about iodine preparation. It is similar to preparation of chlorine and bromine, where MnO2 is reacted with Hi to produce MnI2 and I2.
ठीक है. It is also prepared from crude chili saltpeter. Chili saltpeter is NaNO3, which has some impurities of sodium iodate, and it is from sodium iodate that iodine is produced. It is also produced from seaweeds. Seaweeds contain sodium iodide, which is oxidized by MnO2 in presence of H2SO4 to give iodine. Properties देखेंगे. It is a violet black solid. It sublimes on heating to give blue violet vapors. Amongst the halogens, it is the least soluble in water. ठीक है. And iodine is titrated using hypo solution. It's an important reaction with hypo. Hypo reduces iodine to give NaI and it gets oxidized to give Na2S4O6 sodium tetrathionate. ठीक है. क्लियर है ये? अभी आ रही है ना आवाज? Chili saltpeter Yes, is sir. NaNO3. Chili saltpeter is NaNO3. Bengal saltpeter is KNO3. Sir, sir, it means that sodium nitrate, another name is chili saltpeter. Yes. Okay, sir. Another important nitrate is potassium nitrate, which is called as Indian saltpeter or Bengal saltpeter. It is found in Bengal. Next is reaction of iodine with ammonia. Ammonia does not react with solid iodine, but aqueous ammonia reacts with solid iodine to form an explosive solid NH3.Ni3, which explodes on hammering, explodes on impact. On hammering, on impact, it explodes to give nitrogen and iodine vapors along with formation of ammonium iodide. Iodine is oxidized by KClO3 or KBrO3 to give corresponding iodate, KiO3 or KiO3 and chlorine and KiO3 and bromine. So iodine is oxidized by KClO3 and KBrO3. Sir, why I2 doesn't react? Why NH3 doesn't react with I2? The gaseous phase में iodine क्या? Iodine solid, iodine molecules are very close to each other. वो solvation factor is not there. So solvation releases energy for reaction to take place. So NH3 aqueous में water molecules can cause solvation and solvation will release energy for reaction of NH3 and iodine. Solid को break करना individual molecules में, then individual molecules will react. To break the solid, some energy is required and that energy is generally provided by solvation. ठीक है? Sir, if heat is there, then it will react. Next, we'll study about HCl, hydrogen chloride. Sir. बोलो. Sir, if heat is there, then it will react. Normally, अमोनिया गैस को जब आयोडीन से पास कराते तो रिएक्शन नहीं होता. हीट करोगे तो हो सकता है आयोडीन ही सेपरेट हो जाए, आयोडीन ही वेपर्स बन के निकल जाए. दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन क्लोराइड. Next we'll study about hydrogen chloride. Hydrogen chloride is prepared by heating sodium chloride with concentrated H2SO4. ठीक है, it results in formation of HCl. NaCl plus H2SO4 gives HCl plus NaHSO4 and this NaHSO4 further react with NaCl to give HCl gas. HCl, which is more volatile than H2SO4, can be prepared by this technique. Yes, sir.
नेक्स्ट देखो, ठीक है, HCl can be dried by using concentrated H2SO4. HCl is an acid, ठीक है, the excess moisture can be removed from HCl by using concentrated H2SO4. HCl can also be prepared by direct reaction of H2 and Cl2 or by reaction of H2S and Cl2. Properties देखेंगे, HCl is a colorless pungent smelling gas. Boiling point is around 189 Sir, Kelvin. बोलो, Sir, sir, बोलो. does H2SO4 absorb moisture? Yes, H2SO4 is a dehydrating agent. Concentrated H2SO4, ठीक है, is a very good dehydrating agent. ये Yes, ग्रुप sir, yes, 16 में sir. पढ़ाया था मैंने. हाँ, yes, sir. तो HCl is a colorless pungent smelling gas. Boiling point of 189 Kelvin, freezing point of 159 Kelvin. It is highly soluble in water and is a strong acid. ठीक है, it forms aqua regia when mixed with HNO3 and aqua regia is used to dissolve non-metals. aqua regia के reactions मैंने HNO3 वाले चैप्टर में कराए हैं, ठीक है, ग्रुप 15 में नाइट्रिक एसिड में कराया है, ठीक है, क्लियर है ये. K of HCl is very high, it is 10 to the power 7. So its ionization is almost complete. Aqua regia is obtained by mixing HNO3 and HCl in 1:3 ratio. ठीक है, reaction of aqua regia we have done in HNO3. HCl reacts with salts of weaker acid and displaces the weaker acids from its salts. It reacts with Na2CO3 and Na2SO3 to form H2 and SO2, H2O and CO2 with Na2CO3 and H2 and SO2 with Na2SO3. These are normal displacement reactions. Uses देखेंगे, it is used in preparation of chlorine and NH4Cl. It is used in preparation of glucose from starch by hydrolysis where it acts as a catalyst, ठीक है, and it is also used for extracting glue from bones by purifying of bone charcoal or bone black. सर बोलो. सर ये ग्लू क्या है सर, लाइक adhesive है Gum, कि या gum. कुछ और है? ओके Sir, glue from Bone black or bone charcoal. Glue from bones. वो क्या है? Bones मतलब Bones मतलब हड्डी. उससे glue? हाँ, हड्डी से बनाते हैं ग्लू. ओ इसकी हड्डियों से. नेक्स्ट देखो, oxy acids of halogen. Halogen forms 4 different oxy acids: hypohalous acid, halous acid, halic acid and perhalic acid. Fluorine के लिए एक ही oxy acid exist करता है, that too is not very stable. HOF decomposes to give HF and O2. Chlorine forms all the 4 different oxy acids: HOCl, HClO2, HClO3 and HClO4. Acidic strength देखेंगे, with increase in oxidation number acidic strength increases. Bromine does not form HBrO2, it forms HOBr, HBrO3 and HBrO4, and similarly
ठीक, iodine also forms HOI, HiO3 and HiO4. Bromine and iodine do not form HbRO2 and HiO2. The oxy acids, ठीक है, the which are इनके structures हम next page में discuss करेंगे, oxy acids के structures. For different halogens, the oxy acid's acidic strength increases with increase in electronegativity. HClO3 is a stronger acid than HbRO3 is a stronger acid than HiO3. Oxy acids के लिए acidic strength electronegativity इस पे depend करता है. ठीक है, it is reverse of the acidic strength of their hydrogen halides. Hydrogen halides में acidic strength depends on the size of the halogen. ठीक है, HI is a stronger acid than HBr is a stronger acid than HCl. ठीक है, HCl is a strong oxidizing agent. Oxidizing power in different oxy acids is HOCl more than HClO2, more than HClO3, more than HClO4, because HOCl is the least stable and HClO4 is the most stable. The least stable oxy acid HOCl decomposes readily and it is a strong oxidizing agent. E0 values अगर compare करेंगे तो HOCl has a very high E0 value of 1.63 volt, which is higher than the E0 value of ClO minus. So we say that HOCl is a stronger oxidizing agent than OCl minus. Structures देखो बनाया मैंने. In all these, chlorine is sp3 hybridized, where chlorine has 3 lone pair and an OH. In HClO2, chlorine has 2 lone pair. In HClO3, chlorine has only 1 lone pair. In HClO4, chlorine has only 1 lone pair. In all of these chlorine is sp3 hybridized. So could you explain the first point again, the electronegativity one? Oxy acids में acidic strength only depends on electronegativities. Only नहीं, मतलब the major factor is electronegativities. ये पहले भी किया हमने periodic table में, जब oxy acids का acidic strength compare करते हैं तो we compare by electronegativities. More is the electronegativity, more is the acidic strength of an oxy acid. ठीक है, तो ऑक्सी एसिड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन देन आयोडीन. HClO3 is a stronger acid than HbRO3 is a stronger acid than HiO3. Okay, sir. सर वेटिंग रूम चेक कीजिए ना. कौन बोल रहा है भाई? सर जय. तू अपना ध्यान देना भाई. सर रोहित का मैसेज आ रहा है कि बोल रहा है. रहने दे भाई, जो लेट ज्वाइन करेंगे उनको नहीं ज्वाइन करने को मिलेगा. ओके सर. Next we'll study about interhalogen compounds. Interhalogen compounds can be of 4 types in oxidation numbers +1, +3, +5 and +7. ठीक है, XX dashed, XX dash 3, XX dash 5 and XX dash 7. X dash is the smaller halogen, X is the larger halogen. ठीक है, it is prepared by direct combination of halogens under different conditions. Chlorine and fluorine, when reacted in 1:1 ratio at 437 Kelvin, result in formation of chlorine fluoride. Chlorine, when reacted with excess of fluorine at around 573 Kelvin, results in ClF3. Iodine and chlorine reacted in 1:1 ratio give ICl. Iodine reacted with excess chlorine result in formation of ICl3. ठीक है. Bromine reacted with fluorine, excess fluorine results in BrF5. But bromine, when reacted with fluorine diluted with nitrogen, diluted with nitrogen का मतलब फ्लोरीन के साथ थोड़ा बहुत नाइट्रोजन मिक्स करें ताकि फ्लोरीन का कंटेंट थोड़ा कम हो जाए. It results in formation of BrF3. Iodine, when heated with fluorine, excess fluorine results in formation of IF7, whereas at room temperature or around 20 degrees Celsius, iodine reacts with fluorine to form IF5. Next देखो,
Summary of properties of interhalogen compounds. ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी से करना है. मैं एनसीईआरटी में ये पार्ट एक बार खोल के एक्सप्लेन कर देता हूँ. रुको. एनसीईआरटी बुक में इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज समराइज्ड हैं. This table summarizes the physical properties of interhalogen compounds. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स मैंने अलग से डिस्कस किए हैं, बट दिस टेबल समराइजेज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो ये वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज का लिस्ट एक बार एनसीईआरटी से कॉपी करना है. तो इसमें से फर्स्ट 3 कॉलम्स कॉपी कर लो. स्ट्रक्चर्स मैंने सेपरेटली डिस्कस किया है. ठीक है, क्लियर है ये? सर वो BRCl का सर इसमें मतलब कुछ दिया नहीं है बराबर, मतलब ये नीचे वाला वही लिखना है क्या? BRCl के आगे B लिखा है, गैस. ठीक है, B के आगे क्या लिखा है? द प्योर सॉलिड इज नोन एट रूम टेम्परेचर बट इट डाइमराइजेस. और क्या लिखा है? हाँ, रूम टेम्परेचर पे प्योर सॉलिड एग्जिस्ट करता है. ठीक है, गैस और सॉलिड दोनों ही एग्जिस्ट करता है, मतलब इट शो सब्लिमेशन. इसमें लिखा है BRCl गैस टेबल में, और नीचे लिखा है प्योर सॉलिड इज आल्सो नोन एट रूम टेम्परेचर. दैट मींस सॉलिड शो सब्लिमेशन प्रॉपर्टीज. ठीक है, ओके सर. यस सर. ये हटा दूं ना? Yes, sir. All these interhalogen compounds undergo hydrolysis to give different products. Hydrolysis results in formation of an oxyacid of halogen along with the hydrogen halide. Okay. The oxidation numbers do not change. Halogen in +1 gives the oxyacid. Halogen in the positive oxidation state gives an oxyacid, whereas the halogen in the negative oxidation state gives hydrogen halide. XX dashed gives HOX, XX dash 3 gives HXO2, XX dash 5 gives HXO3, and XX dash 7 gives HXO4. Okay. The oxidation numbers remain unchanged. All these hydrolysis reactions are non-redox reactions. If you look at the structures of these interhalogen compounds, XX dash diatomic molecule will be linear. XX dash 3 is T-shaped or bent T-shaped. Okay. Ideally, it should be T-shaped, but due to the repulsion of the lone pair, it becomes a bent T-shaped in shape. And lastly, we'll study about XX dash 5, which is square pyramidal, and XX dash 7, which is pentagonal bipyramidal. ठीक है, यहाँ तक नोट किया है ना सबने? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we'll continue with oxides of halogen. Chlorine oxides. ठीक है, we'll discuss preparation and properties of some of the chlorine oxides. ठीक है, let us first discuss Cl2O. ठीक है, Cl2O chlorine monoxide. It is prepared. सर कॉपी करें. हाँ, ये कॉपी करना है. ठीक है, ये इसका टाइम दूंगा मैं कॉपी करने के लिए. Cl2 reacted with freshly prepared HgO results in formation of Cl2O chlorine monoxide. Even bromine monoxide can be prepared by this reaction. It is a yellowish brown gas soluble in water. It slowly reacts with water to give a colorless solution of HOCl. It is a strong oxidizing agent. It oxidizes ammonia to give nitrogen gas. On reaction with NaOH, it produces sodium hypochlorite. If we look at the bond angles, the chlorine oxygen chlorine bond angle is greater than the tetrahedral bond angle of 109 degree, and this is because of
delocalization of the lone pair of oxygen on chlorine, which decreases the lone pair repulsion. As a result, the bond angles increase. The bond angle in Cl2O is found to be around 111 degree. Even in bromine oxide, it is almost 111 degrees, greater than the tetrahedral bond angle of 109. Interhalogen compounds formed between two halogen. ठीक है, तो interhalogen compounds. नोट कर लो जल्दी से. सर बोलो. सर Cl2 में हम लोन पेयर रिपल्शन को अकाउंट में नहीं लेंगे. लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है. एक्चुअली क्या होना चाहिए, लोन पे रिपल्शन से बॉन्ड एंगल्स कम हो जाने चाहिए थे ना. जैसे H2O कंपेयर करेगा तो H2O में बॉन्ड एंगल अराउंड 105 आता है. बट ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट इज टेकिंग पार्ट इन डिलोकलाइजेशन इन द वेकेंट d ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन, so that decreases the electron density. As a result, lone pair repulsion is lower. Okay. Also, chlorine is a third period atom. Larger chlorine atoms will also have some repulsion. ठीक है. हाँ, ओके. सर पी ब्लॉक आज खत्म हो जाएगा. Yes. लास्ट पेज एक दिखा दीजिए बस. थैंक यू सर. Next, we'll talk about chlorine dioxide. Okay, there are various reactions through which chlorine dioxide can be prepared. Can be prepared from NaClO3 or KClO3 by passing SO2 gas. Can be prepared by heating KClO3 with oxalic acid, or can be prepared by heating AgClO3 with chlorine, or by reaction of Cl2O6 with N2O4, or by heating HClO3 with HCl. It is a yellow gas. It dissolves in water, giving a dark green solution, and slowly reacts with water to become colorless. It undergoes disproportionation when added to water, giving a mixture of HClO2 and HClO3. We say that ClO2 is a mixed anhydride. It's the anhydride of HClO2 as well as HClO3.
can call it as a mixed anhydride. ठीक है, टर्न करूं अभी? नो सर। So 1 minute. So what is the temperature in the third reaction? 1 second. -90°C. Okay, sir. टर्न करूं अभी? Yes, sir. 1 minute, sir. Yes, sir. Next देखो, ClO2 reacts with ozone to form Cl2O6, which forms an yellow solid. Okay. Cl2O6 is also a mixed anhydride. It reacts with NaOH to form a mixture of two different salts. Although Cl2O6 is diamagnetic, on heating it forms ClO3, which is paramagnetic. Cl2O6 can be considered to be made up of ClO2 plus and ClO4 minus. Okay. Cl2O6 may be considered as to be made okay. On reaction with HF, it produces FClO2 and HClO4, where H plus of HF goes to ClO4 minus and F minus goes to ClO2 plus. Okay. ClO2 also reacts with NaOH to give a mixture of two salts, NaClO2 and NaClO3. Okay. ClO2 on reaction with H2O2 gives ClO2 minus and oxygen.
ClO2 oxidizes HI to give iodine. Okay, next we'll study about dichloroheptoxide, which is prepared by dehydration of HClO4. The dichloroheptoxide is the most stable oxide of chlorine. ठीक है, नोट कर लो. हो गया. तो yes sir, done. किसी भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट ऐसा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, but focus on the compounds and reactions that are given in NCERT that are first priority. Okay, then you can give priority to your notes and the reactions given in the booklet. ठीक है, तो प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को, तो पहले एनसीईआरटी के कंपाउंड्स और एनसीईआरटी में जितने रिएक्शंस गिवन उसको प्रायोरिटाइज करेंगे. Then we'll look at the reactions, extra reactions, additional reactions and compounds that we have done in class notes or in the booklet. ठीक है, नेक्स्ट देखो. Yes sir. Cl2O7 is the only exothermic oxide of chlorine. Only exothermic oxide of chlorine, because the heat of formation of Cl2O7 is found to be negative. Is the only exothermic oxide of chlorine. All other chlorine oxides are endothermic because their heat of formation is found to be positive. Cl2O7 is stabilized by resonance. Cl2O6 देखेंगे. Cl2O6 के लिए दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रपोज्ड है. 2 ClO3 molecules joined by a chlorine-chlorine bond, or 2 ClO3 molecules attached via coordinate bonds. ठीक है. In the solid state, it is found to be ionic, consisting of ClO2 plus and ClO4 minus ions.
ठीक है, क्लियर है ये? Sir, there are two structure of Cl2O6 or it is just theory? देखो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, ठीक है? तो देयर इज अ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलेंगे बट दोनों ही स्ट्रक्चर्स प्रपोज्ड है, ठीक है? एंड देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एज टू विच स्ट्रक्चर इज मोर अप्रोप्रिएट, तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है? हो गया, नोट कर लिया? नो सर। नो सर। सर बोलो। सर Cl2O6 के स्ट्रक्चर में एक डाउट था। जैसे Cl2O7 है तो उसमें से एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो वो भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है ना? एक एक डबल बॉन्ड वो निकालेगा? हाँ, जो Cl2O7 है उसमें से एक हाँ, Cl डबल बॉन्ड O है वो निकलेगा तो भी तो वही फॉर्मूला आएगा वैसे ना? पॉसिबिलिटी तो बहुत सारे हैं बट ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ज्यादा अप्रोप्रिएटली, क्योंकि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ClO3, तो दो ClO3 यूनिट्स तो होने चाहिए इसमें, अच्छा सर, ओके। ठीक है? Cl2O6 को हीट करोगे तो ClO3 बनेगा, तो दो ClO3 यूनिट्स होने चाहिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स सही है। यस सर। टर्न करूं अभी? यस सर। Next, we'll talk about pseudo halogens and pseudo halides. Okay, these are a group of two or more atoms in which at least one atom is nitrogen, and they show similarity in properties. They have similar properties of halogens and halide ions. They show similarity in properties to halogens and halide ions. Okay, these are called pseudo halides and pseudo halogens. Okay, some common pseudo halides and pseudo halogens I have listed: Cn minus, OCn minus, SCn minus. Okay, Cn minus is cyanide, corresponding pseudo halogen is cyanogen gas. OCn minus cyanate, corresponding pseudo halogen is oxycyanogen. Then thiocyanate and thiocyanogen, selenocyanate and selenocyanogen, tellurocyanate and tellurocyanogen. ठीक है, azidothiocarbonate and azidocarbon disulfide, and azide ion which does not have any corresponding pseudo halogen. So these are some pseudo halides and pseudo halogens. Say X minus is the halide ion, X2 is the halogen gas. Similarly, we get a pseudo halide monovalent ions and their diatomic molecules. सर सूडो हलाइड और सूडो हैलोजन में मतलब फर्क क्या हो फिर? फ्लोराइड और फ्लोरीन में क्या फर्क है?
मतलब वो कि आयन है। वही फर्क है सूडो हैलाइड और सूडो हैलोजन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है क्या इस सूडो हैलोजेंस और हैलोजेंस में? Cl मतलब माइनस और Cl2 में क्या सेम होता है Cl माइनस और Cl2 में? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि अरे प्रॉपर्टी। जिसका जैसे जिस हैलोजन का आयन है उसको हैलाइड आयन बोलते हैं। नहीं, मैं वैसे नहीं बोला, जैसे EN था ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा वैसा रहता था नहीं नहीं, ऐसा एनालॉजिकल। कुछ भी नहीं है इसमें। ओके ओके। But these are anions and molecules having properties similar to halide ions and halogens. Sir, can you tell some properties that are similar? जैसे tendency to form diatomic molecule, जैसे XX forms X2, वैसे CN combines to form cyanogen. This is one property. Then other properties, they form insoluble precipitates with silver ions. AgCN is a precipitate, AgCl is a precipitate, AgOCN is a precipitate, AgSCN is a precipitate. ठीक है, तो सिल्वर के Okay, साथ दे sir. फॉर्म insoluble precipitates. ठीक है, टर्न करूं? 2 minutes, sir. सर 2 मिनट। So the sixth one is SCSN3, right? SCSN3 minus, yes. Okay, thank you. टर्न करूं अभी? Yes, sir. Yes, sir. Now we'll start with the group 18 elements, the noble gases. ठीक है, occurrence, we'll talk about the occurrence of the noble gases. All noble gases except radon and oganesson, which are radioactive, are found in atmosphere. Around 1% of air contains the noble gases, and which mainly consists of argon. Helium is also found along with minerals of radioactive elements. Okay, minerals of uranium, cerium, lanthanum, thorium, etc. contain some helium because decomposition of these minerals produces alpha particles which get collected as helium. Okay, and sometimes neon is also found along with these minerals. Okay. Radon is obtained by decay of radium. Okay. Oganesson is a man-made element. ठीक है, प्रिपरेशन और कैसे ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया मैंने. It is made by reaction between calcium and californium atoms. ठीक है, रिएक्शन मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, ये नोट कर लो. बट दो एलिमेंट्स के रिएक्शन से कंपाउंड नहीं बनना चाहिए. न्यूक्लियर रिएक्शन. ओके. obtained by a nuclear reaction.
most of the elements with atomic numbers greater than 100 are man-made elements. Okay, and they are prepared synthetically by colliding nucleus of two different atoms. सर रेडॉन और वो दूसरा किधर मिलते हैं फिर? बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ. So, but shouldn't it be radioactive because period 7 element? Yes, definitely they are radioactive. Both radon and oganesson are radioactive. Turn करूँ page? No, sir. Right. No, sir. सर तो ये जो सिंथेटिक एलिमेंट्स है उसके मतलब प्रॉपर्टीज तो अननोन है ना, मतलब Very वो सब difficult few to study milligrams- क्योंकि उनका ये बहुत कम होता है, हाफ लाइफ बहुत कम होता है. It is very difficult to study their properties. और सर मतलब ये जब भी इसका फॉर्मेशन होता है तो उसका सिर्फ फ्यू मिलीग्राम्स बनता है या मतलब कुछ सफिशिएंट अमाउंट बनता है? बहुत कम अमाउंट बनता है, ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट्स में उनको प्रिपेयर करते हैं और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी देम बिकॉज दे डीके ऑलमोस्ट इमीडिएटली टू गिव सम अदर सब्सटेंसेस क्योंकि दे आर रेडियो एक्टिव. ओके सर. टर्न करूं अभी? Yes, sir. So, एक second. सर ये ऑर्गेनाइजन तो पीरियोडिक टेबल के उसमें तो मतलब लास्ट एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट 118 एटॉमिक नंबर. Your pitch blend is U3O8 or U3OG? U3O8 uranium oxide. It's an important ore of uranium. And clevite is also uranium oxide, UO2, uranium dioxide. ठीक है. Monazite is cerium, lanthanum and thorium phosphates. ठीक है, टर्न करूं अभी? Yes, sir. Radium decomposes to give radon and alpha particles, helium. तो रेडियम के डिकम्पोजिशन से रेडॉन बनता है. ठीक है. ओगानेसॉन इज अ मैन मेड एलिमेंट फॉर्म बाय ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, कैलिफोर्नियम एंड कैल्शियम. Californium and calcium fuse to give oganesson and neutron, and an isotope of calcium is used. Okay, calcium is normally calcium 40. This is calcium 48 that is used for preparation of oganesson. The oganesson has a half-life of 0.7 milliseconds. It is highly unstable. It is very difficult to study its properties. So it is almost impossible to experimentally study its properties. Radon is also radioactive, but it has a relatively higher half-life of around 3.8 days. If we study the physical properties of different halogens, atomic size increases from top to bottom, ionization energy decreases from top to bottom. Variation of delta Heg is irregular. It is positive for all the noble gases, except for helium. It decreases, it becomes less positive as we go down the group because smaller atoms have higher electron density. The addition of electron is more difficult on smaller atoms. It slightly becomes more easy
for the larger atoms. So delta Heg becomes less positive as we go down the group. Only helium has the lowest positive value of delta Heg. But for all the noble gases, delta Heg has a positive value. Normally, for other elements, delta Heg has a negative value. ठीक है, clear है ये? CF is californium. Yes. Second reaction में CF है. CF is californium. एक मिनट रुकना. सर जितना ज्यादा हाफ लाइफ उतना ज्यादा रेडियो एक्टिव की, जितना कम हाफ लाइफ उतना ज्यादा. सर बोल बुबरत, क्या बोल रहा था? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि वो हाफ लाइफ जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा रेडियो एक्टिव की, जितना कम होता है उतना ज्यादा रेडियो एक्टिव. हाफ लाइफ ज्यादा मतलब ज्यादा स्टेबल. ओके ओके. तो हार्मफुल ज्यादा मतलब कम हाफ लाइफ ना. देख, जितना ज्यादा हाफ लाइफ है उतना ज्यादा स्टेबल, उतना स्लोली वो एमिशंस करेगा, रेडियो एक्टिव एमिशंस, उतनी कम रेडियो एक्टिविटी शो करेगा. ओके ओके. ठीक है. So second reaction on the left side, what is the last element? Neutron. Okay, okay. That is neutron.
ठीक है, टर्न करूं पेज अभी? यस सर। नेक्स्ट देखो, ionization energy of xenon is comparable to ionization energy of molecular oxygen. Important point है, hence xenon and oxygen form some similar compounds. An important example is XCPTF6 and O2PTF6. ठीक है, xenon has an ionization energy of 1170, molecular oxygen has an ionization energy of 1175, which are quite close, and therefore they show some similarities in their chemical reactions. Densities of these noble gases increases from top to bottom, there is no exception, and melting point also increases from top to bottom. If you look at their chemical properties, the noble gases are the least reactive elements because of their high ionization energies and positive values of delta H, Eg. Reactivity increases from top to bottom as ionization energy decreases. Okay? There is no known compound of helium, neon or argon. Krypton का KrF2 एक compound known है. Xenon के लिए बहुत सारे fluorides और oxides known है. Xenon forms a number of fluorides and oxides. ठीक है, ये note कर लो. हो गया? 1 minute sir. Yes, sir. Not much difference in NCERT old versions and new versions. ठीक है? Not an issue if you have an old version of NCERT. Yes sir, done. नेक्स्ट देखो,
ठीक है। xenon के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आई हैव लिस्टेड डाउन द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ xenon, XeF2, XeF4, XeF6, XeF4, XeO2F2, XeO3, XeO4, X4, XeO6, ठीक है। नोबल गैसेस also form clathrate compounds with ice, ये point water में डिस्कस हाइड्रोजन चैप्टर में डिस्कस किया है, in which atoms of krypton, xenon, etc. can be trapped in the vacant spaces of lattice of ice. Smaller atoms such as helium, neon do not form such compounds because these atoms cannot be trapped in different compounds of xenon. इसमें mainly we'll be studying about the xenon fluorides, XeF2, XeF4 and XeF6. ठीक है, starting with XeF2, it can be prepared by reaction of excess of xenon with fluorine or reacting xenon and fluorine in 2:1 volume ratio at around 673 Kelvin and 1 bar pressure. It results in formation of XeF2 solid. ठीक है, टर्न करूं अभी? नो सर। So can you show the last page for 1 second? ये देखो, Thank you, sir. Done. यस सर, डन। नेक्स्ट देखो, XeF2 can also be prepared by reaction of xenon and O2F2, ठीक है। Another reaction is by using AgF3. AgF3 when heated with xenon gives AgF2. AgF3 silver normally forms fluoride in +1 oxidation state. ठीक है, AgF3 is prepared by reaction of KAgF4 and BF3. ठीक है, and then AgF3 when heated with xenon gives AgF2, a bronze solid, along with xenon fluoride. XeF2 is a colorless crystalline solid, ठीक है, which sublimes at room temperature. In fact, all xenon fluorides sublime at room temperature. ये बाद में अलग से भी लिखाया है मैंने, तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, it sublimes at room temperature.
Similar to naphthalene, it forms vapors at room temperature also. It dissolves in water to form a solution with a pungent smell, but it is much more soluble in anhydrous HF. Okay. It is generally stored in containers of Monel metal. Monel metal is an alloy of nickel and copper. Okay. It oxidizes H2O, hydrogen, oxygen, and HCl. It is a fluorinating agent as well as an oxidizing agent. It is generally stored in containers of Monel metal. Monel metal is an alloy of nickel and copper. ठीक है? फिर इसको क्या रीजन है? XeF2 fluorinating agent है, may cause oxidation. ग्लास कंटेनर्स में नहीं स्टोर करेंगे. ग्लास सिलिका रिएक्ट विद क्लोरीन. ओके सर. सर आज डाउट्स लोगे? ये फिनिश हो जाएगा, आज फिनिश कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम डाउट ले लेंगे. ठीक है सर. ये फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव के भी ले लोगे ना ग्रुप 16 के? 15-16 ना? हाँ ले लो. 15 तो ऐसे हो गया था. 16 ठीक है. थैंक यू सर. देख, डाउट सेशन तो सेपरेटली कंडक्ट होता ही है. ठीक है, हर बैच का कोई ना कोई डाउट सेशन तो हो ही जाता है, हर वीक नहीं तो एवरी ऑल्टरनेट वीक हो जाता है. इस वीक नहीं था आपका? ठीक है, नॉट एवरी वीक बट ऑल्टरनेट वीक तो हो ही जाता है. तो ट्राई करो उसमें भी पूछने का, थोड़ा बहुत मैं क्लास में भी बता दूंगा. सर ने लिया था सर. हुआ था ना, तो थोड़ा बहुत तो होएगा ही. मतलब हाँ, हर वीक जरूरी नहीं है मेरा ही हो, MKC सर का हो जाए, किसी और का हो जाए. सर पर आप ही ले लो ना, बिकॉज आप ही होमवर्क देते हो तो वो बराबर बैठ बाबा कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. मैं बोल रहा हूँ नॉट एवरी वीक तो ऑल्टरनेट वीक तो हो ही रहा है ना मेरा डाउट लेक्चर. ठीक है, मैं क्लास में भी ले लूंगा, जो थोड़ा बहुत बच जाएगा वो डाउट लेक्चर में ले लूंगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, reaction of XeF2 plus water. XeF2 hydrolyzes to give xenon, HF and oxygen. Effectively, it is oxidizing water to give oxygen gas. This hydrolysis occurs normally very slowly,
but reaction occurs rapidly in presence of NaOH or KOH. In presence of an alkali, in presence of a base, reaction occurs faster. It oxidizes hydrogen to give HF. It oxidizes iodine to give iodine fluoride. It oxidizes HCl to give chlorine gas. It also gives addition compounds with, एक second रुकना. It also gives addition compounds with many fluorides. It acts as a fluoride donor, where it gives its fluoride ions to PF5 or SPF5. In these reactions, in the reaction 5, it acts as a fluoride donor. सर नेक्स्ट वीक का वो TWT टेस्ट में पूरा भी ब्लॉक आएगा? कभी है TWT? सर 27th को है. Sunday, next Sunday. I think 15-16 तक तो आएगा ही, क्योंकि बाकी बैचेस में पता नहीं कितना हुआ है मोबिन सर का, तो आई थिंक 15-16 तक तो आएगा ही आएगा. ओके सर. मैं कंफर्म कर दूंगा मंडे को, ठीक है. XCF2 has a linear shape. It reacts with NO and NO2 to form NOF and NO2F. Next, we'll study about preparation and properties of XCF4. XCF4 can be prepared by reacting xenon and fluorine in 1:5 ratio at around 873 Kelvin and 7 bar pressure. It results in formation of XCF4 solid. It is also a colorless crystalline solid and sublimes at around 298 Kelvin. Room temperature पे even XCF4 solid sublimes. All xenon fluorides sublime at room temperature. ठीक है, नोट कर लो जल्दी से.
नोट कर लिया? 1 minute. सर लास्ट पेज देखो ना सर 1 मिनट की। लास्ट पेज हाँ देख लो एक बार। हो गया? हाँ सर हो गया। Yes, sir. Done. XeF4 is less volatile than XeF6 and dissolves in trifluoroacetic acid. Even XeF2 is less volatile than XeF6. Okay. Reactions of XeF4 are similar to XeF2, but it is a stronger fluorinating agent. It converts hydrogen to HF, it converts HCl to chlorine. Okay. It converts mercury to mercuric fluoride. On reaction with excess xenon, it gives XeF2. It oxidizes iodide ions to give iodine gas. ठीक है, इसका hydrolysis important है. ठीक है, it gives a redox reaction with on hydrolysis. It gives a disproportionation reaction on hydrolysis where xenon is oxidized as well as reduced. It is oxidized to give XeO3 and reduced to give xenon, along with evolution of oxygen gas. The XeO3 produced is an explosive white solid. Properties of XeO3 I have discussed in next page. ठीक है, ये note कर लो. राइट साइड का थोड़ा चेक कर सकते हो क्या? एक सेकंड. ठीक है. CF3COH is trifluoroethanoic acid, IUPAC name. नोट कर लिया? टर्न करूं पेज? यस सर. देखो, ड्राई XeO3 is an explosive white solid. It is relatively less explosive in aqueous solution. When added to water in presence of NaOH, it first forms sodium xenate, which undergoes disproportionation to give perxenate ion, xenon, and oxygen. Okay? Sodium perxenate forms a hydrate of formula Na4XeO6.8H2O. The xenic acid is a very weak acid.
तो perxenate ion undergoes disproportionation. The sodium perxenate disproportionates in acidic medium to give, ठीक है, XeO3, gets reduced to give XeO3, ठीक है. The perxenate ion is also a strong oxidizing agent. It oxidizes Mn2 plus to give MnO4 minus ions. Okay, now we'll study about the properties of XeF6. तो एक्चुअली हमने XeO3 के प्रॉपर्टीज यहाँ कवर कर दी. XeO3 अलग से नहीं करेंगे. The properties of XeO3 we have covered here. The XeO3 is an explosive solid. ठीक है, it dissolves in NaOH to form sodium xenate, which slowly undergoes disproportionation to form sodium perxenate. Perxenate undergoes reduction in acidic medium to give XeO3. It is a strong oxidizing agent. It oxidizes Mn2 plus to form MnO4 minus. Now we'll study about preparation of XeF6, which is prepared by reacting xenon and fluorine, excess fluorine, at around 573 Kelvin and 60 to 70 bar pressure. नोट कर लो. नोट कर लिया. Last line. No, sir.
हो गया अभी? Yes, sir. XeF6 can also be prepared by reaction of XeF4 and O2F2. Okay, it is also a colorless crystalline solid and sublimes at 298 Kelvin. Its liquid and vapor forms are greenish yellow in color. Okay, hydrolysis of XeF6 is non-redox. Okay, XeF2 and XeF4 hydrolysis are redox reactions, whereas hydrolysis of XeF6 is non-redox. Important है, hydrolysis of xenon fluorides is an important reaction. The XeF6 plus H2O, limited amount of water gives xenon oxyfluoride, XeOF4. 2 moles of water gives XeO2F2 and excess of water gives XeO3. XeO3 की properties अलग से discuss किया है हमने. It is also an oxidizing agent. It oxidizes hydrogen to give HF, HCl to give chlorine gas, and ammonia to give nitrogen gas. हो गया? No, sir. Yes, sir. Done. Sir, 2 minutes.
XeF6 also reacts with silica to form XeOF4, XeO2F2 and XeO3. This reaction is similar to reaction with water. So XeF6 should not be kept in glass vessels. Similarly, XeF2 and XeF4 also should be avoided to be kept in glass vessels because they are fluorinating agents. They react with silica. XeF6 की एक important property, it can act as a fluoride donor as well as a fluoride acceptor. XeF6 plus alkali metal fluorides, XeF6 acts as a fluoride acceptor. It forms XeF7 minus. XeF6 reacts with NOF to form XeF2 minus. In these two reactions, XeF6 acts as fluoride acceptors, whereas in general XeF6 can also act as fluoride donors when it reacts with Lewis acids. BF3 के साथ it will form BF4 minus, ASF5 के साथ it will form ASF6 minus. So XeF6 can act as fluoride donors as well as fluoride acceptors. XeF2 and XeF4 are fluoride donors, whereas XeF6 is both a fluoride donor as well as fluoride acceptor. ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। एक मिनट में आगे डिस्कस कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लेना बाद में. ठीक है, लेट मी कंप्लीट द डिस्कशन पार्ट. ठीक है, ये बाद में कॉपी कर लेना. इसके बाद मैंने बस स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ज़ेनॉन कंपाउंड्स. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स मतलब केमिकल बॉन्डिंग में किया ये तुम लोगों ने, ये स्ट्रक्चर्स उसी की कंसेप्ट पे बेस्ड है. बस एक एडिशनल एक कंपाउंड देखो, XeFA2 माइनस जो कराया मैंने यहाँ पे. XeFA2 माइनस हैज 8 xenon fluorine bonds. It shows a hybridization of sp3d4 and it has a square anti-prismatic structure. इसका स्ट्रक्चर ऐसे समझो कि xenon आटम एक सेंटर पे है, xenon के ऊपर एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, xenon के नीचे एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है. This overall structure is called as square anti-prismatic. ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स के बाद लास्ट में मैंने uses of noble gases डिस्कस किया है. So that's all. This completes the noble gas elements. तो ग्रुप 17-18 भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास में पहले ग्रुप 15-16 का डिस्कशन करेंगे. ये तुम लोग कॉपी कर लेना पूरा. ठीक है, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, ये तुम लोग पूरा कॉपी कर लेना. ठीक है, तो इसके बाद केवल स्ट्रक्चर्स और यूजेस डिस्कस किए हैं. ठीक है, ओके सर. यस सर. यस, पी ब्लॉक इज कंप्लीट. थैंक यू सर. सर डी एंड एफ कितना बड़ा है सर? पहले सॉल्ट एनालिसिस करेंगे, बाद में डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे. डी एंड एफ ब्लॉक छोटा है क्योंकि मोस्टली हम डी ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कर लेते हैं. डी एंड एफ ब्लॉक ज्यादा नहीं है. ठीक है, मोस्टली 1 और 2 लेक्चर्स. सर फिर मेटलर्जी भी है ना? मेटलर्जी भी है. यस सर, तो 17 एंड 18 के सेम साइज मान सकते हैं? यहाँ डी एंड एफ ब्लॉक के सेम साइज ऑफ 17 एंड 18. यस, ओके सर. सॉल्ट एनालिसिस, डी एंड एफ ब्लॉक और ये मेटलर्जी. ठीक है, यस यस सर. थैंक यू सर. चलो, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.